लेट्स फेस इट, हर कोई अपने सपनों को फॉलो करने से डरता है। क्यों? क्योंकि सपने तो बंद आंखों से देखे जाते हैं। अगर मैं फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैं जब छोटा था, मेरा कोई ड्रीम नहीं था, ना ही कोई इंटरेस्ट। बस जिंदगी चल रही थी, दिन गुजर रहे थे, समय कट रहा था। पढ़ाई खत्म हुई क्योंकि घर वालों ने बोला था, नौकरी मिल गई क्योंकि यही रूल है, और चल पड़े स्कूटी पर सेल्स करने। एक ही सड़क पर चलते रहना आसान है, सेफ है, लेकिन अपना रास्ता बनाना मुश्किल। इसलिए हम सब चलना चाहते हैं सेफ। पर क्या यही जिंदगी का पर्पस है? क्या ऐसे ही चलते चलते वो कर पाएंगे जो करना चाहते हैं? क्या कभी जान भी पाएंगे कि क्या करना चाहते हैं? एक ऑर्डिनरी जॉब, एक नॉर्मल गाड़ी, रोज बॉस की गालियां, मीडियोकर सी लाइफ? ना, ये सब मेरे लिए बना नहीं था। मैं करना चाहता था जो मुझे पसंद है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, travel and to live my life to the fullest. So I needed to take a chance, and I took it, and here I am. Clouds are passing by. Oh, good feeling, good feeling. So guys, welcome back. आज है एक नया दिन। सुबह हुई है, अभी नाश्ता कराए लोबो के साथ में, कुछ ऑमलेट वगैरह इजी। और अभी हम जा रहे हैं बाहर। लोबो मुझे लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ी में घुमाने के लिए, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन कुछ अच्छी जगह पे, कुछ नेचर को एक्सप्लोर करने, शायद कुछ बीच पे, कुछ हाइक वगैरह पे। तो बस निकल रहे हैं अभी। आपको अपडेट रखूँगा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सब देखने को मिलेगा, कौन लोग मिलेंगे पता नहीं। वी विल सी। So come, let's start a new day here in Canary Islands in Tenerife with Travelling Cherry and Lobo. Hasta la vista. We have left, me and Lobo. Lobo is driving. We're heading to the north, to some national park, some jungle, some forest, I don't know. But we'll keep you updated. It's going to be an interesting day. Guys, we arrived here at a very cool spot, and the Lobo stopped to have a look, and the scenery looks magnific. There are clouds, there's sea, there's mountains, there's cloud passing by. I'll give you a look. It looks so amazing. पूरा curvy road है. So clear blue sky. और ये देखिए दूर तक, वो दूर आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद, वो पूरे क्लाउड्स है। तो क्लाउड्स पास हो रहे हैं और क्या सीनरी है, उसके पीछे बीच है, आगे पहाड़ है। So guys, here we are, and we are walking on these volcanic rock material which has been now, you know, from long time जम गया है यहाँ पे। तो अभी इसके ऊपर से चल रहे थे। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पे जो कि डेजर्ट है, तो वहाँ पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन पाथ है, लेकिन ये डेजर्ट की तरह लग रहा है, पहाड़ है लेकिन डेजर्ट है। बट एनीवे, लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। Let's go there, explore there with Lobo. He
He's leading me from the front. Ale. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. It's like a family tree. गाइस ये था जो पे हम लावा के वहाँ गए थे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो था जो कि लास्ट बहुत साल पहले इरप्ट हुआ था, तो उसकी लावा की वजह से पूरे रॉक्स की फॉर्मेशन हो गई है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा मुश्किल था, हम उसके ऊपर चल रहे थे, बाकी लोग अपना नॉर्मल पाथ पे जा रहे थे। बट एनीवे नाउ वी आर हेडिंग अप मोर फर्दर नॉर्थ एंड लोबो सेड दैट देयर इज मोर नाइस प्लेसेस टू सी। सो चलिए लेके चलते हैं आपको और ऊपर नॉर्थ में। बहुत ही तेज़ हवा है, मैं अपनी कैप नहीं लेके आया तो उसकी वजह से कानों में बहुत ठंड लग रही है। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं चांद पे। चांद पे कहने का मतलब है कि कुछ लोग जो यहाँ के बारे में जानते होंगे तो बिल्कुल मून की तरह लगती है डेजर्ट। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे मून की तरह लगती है और क्या खास है डेजर्ट। Bring the funk back. गाइस हम पहुंच गए एक और कूल स्पॉट पे, और यहाँ से बिल्कुल हम बादलों के पास पहुंच गए। बादलों की हाइट पे एक्चुअली, और बादल पास हो रहे हैं और पीछे माउंटेन है जिस पे ऊपर अभी भी स्नो दिखाई दे रही है। क्या अमेजिंग लैंडस्केप है। वाह, आपको दिखाता हूँ अभी। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। जाते जाते हमने दिखा और छोटा सा ये हिल था और हिल के पीछे पूरे पहाड़ बादल ही बादल है। तो हमने सोचा कि बिल्कुल वहाँ चलते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखिए आप, बादल बिल्कुल सड़क के बीच तक आ रहे हैं। तो देखिए पीछे पूरे बादल आए हुए हैं, क्लाउड्स, सुपर कूल। व्हाट डू यू मीन बाय लेटर? Yes. It's insane. Everything gets red and Yeah. glowing. क्या शानदार माहौल है। वो देखिए पीछे इतना बड़ा पहाड़ है और बिल्कुल ऊपर स्नो से कवर्ड है, और इस तरफ पीछे अलग अलग कलर, सारा कलर चेंज हो रहा है। ग्रीन है, ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, ऊपर ब्लू स्काई, सुपर कूल। Look at the back, guys. It's so awesome. It's amazing.
Nature at its best form. Wow. Clouds are passing by. Oh, good feeling, good feeling. Thanks, man. Love is here. He got me here. My man. गाइस ये व्यू है पीछे, देखिए बादलों से भी ऊपर, और क्या क्या नज़ारा है टेनरीफ में। पहाड़ भी, ऐसे व्यूज़ भी, बीच भी, और वहाँ पे वो रहा बड़ा वाला पहाड़ जिसके पास में थे अभी हम। तो गाइज़ मैं और लोगो अभी घर आ गए वापस। पूरा दिन आज हम इधर उधर घूमते रहे, मुझे घुमाता रहा, काफ़ी जगहों पे गए हम, इंटरेस्टिंग जगहों पे, बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स देखे और बहुत अच्छी एकदम चेंज होती हुई जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स देखे और बहुत मज़ा आया। तो अभी हम वापस आ गए हैं, अभी चिल कर रहे हैं, मैं खाना बना रहा हूँ और क्रीमी चिकन बना रहे हैं लोगों के लिए और मेरे लिए, हम दो ही हैं, और साथ में चावल राइस। तो वो चालू है यहाँ पे, इधर अपना म्यूज़िक का सिस्टम वो अपना सेटअप कर रहा है, वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज एक काल चिल स्वार चिल इवनिंग, स्वार फ्रेंच में कहते हैं, तो इसलिए मेरे मुँह से निकल गया। तो एक